What do you mean by small fragments? How long? Around 200 to 500 base pairs. People are using 300 to 500, 600, 700 like that. I am not sure if this can be used for 100 or 200 base pairs. I think this can be used. I think so. But I myself has not used so far. I have used more than 300 base pairs. How fast the fragment move from the core? This is very, very fast. So this is actually a real-time sequencing as the fragment passes. I think if a fragment is about 10,000 nucleotide bases, it would take hardly a few minutes to pass all the. So this is again, there is a relationship between the speed of passing the fragment and the accuracy of sequencing. If we set the speed very fast, the accuracy will be low. So, and if we set the speed slow, the accuracy will be high. So this is a control when we set the experiment in the software of the machine. Yes, sir. So the machine asks us whether you proceed in a fast mode or a slow mode. The accuracy will be according to the asking this parameters. If we are working on a single sample, there is no need to attach these indexes. Yes, when we are using single sample, we need to attach these adapters in indexes. Why? Because in case of Lumina, the fragments will attach with the flow cell using these P5 and P7 sequences, and in case of Binoy, these fragments will pass through the receptor membrane using the protein which is attached to these ends of the fragments. What will happen with RNA, fragmentation of RNA? So in case of Illumina, we have to convert the RNA into cDNA. There is no way to directly sequence the RNA. But in case of Binoy, you can directly sequence the RNA using the RNA specific kit. Then we have to purchase the RNA specific kit. But if in case of RNA, the first step is to synthesize the cDNA. For the synthesis of cDNA, we can use the NET. For example, if I am working on Illumina, I can use the cDNA synthesis kit of Thermo Fisher by the name RiverDate kit. So, and if I am working on the Thermo Fisher, I can use the kit that is provided by the Illumina. Just at the step of cDNA synthesis, can be used. So this depends upon the protocol which you are doing. If you are doing transcriptome sequencing, so you have to follow the Illumina protocol. They have recommended which type of cDNA kit you have to use with that procedure. So they usually recommend the kit which is provided by Thermo Scientific. Okay. So in case of and which is a Thermo Scientific machine, they also recommend their cDNA synthesis kit. So we have to use the same kit for an optimized result. We can also use some other kit, then we have to optimize our own protocol. So then we have to optimize the protocol. But if we have to go with the protocol which has already been optimized by the company, then we have to use the kit which is recommended by them. This is the recommendation. लेकिन इसमें ना टकारा की किट्स भी अवेलेबल हैं अल्टरनेटिव के तौर पे, तो क्योंकि आपने जब कॉस्ट को कम करना है तो नो डाउट उसकी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास उसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली इस तरह होता है कि हमारे पास जब एक किट आती है ना Illumina की, तो हम उसका समटाइम cDNA सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद क्योंकि रिजल्ट तो यूज हो जाता है, वो 96 सैंपल की किट है, तो उसके बाद जब हम उसको समटाइम जेल पर चेक करते हैं वेरिफिकेशन के स्टेप के तौर पे, तो हमारा रिजल्ट वो उसके ऊपर जेल पर नहीं आता, कभी तो रिजल्ट लॉस होता है, तो फिर हमें कुछ अल्टरनेटिव ना दूसरा यूज करना तो पड़ता है। वो अवेलेबल है इंशाल्लाह, उसमें बात करेंगे जब ओपन सोर्स बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे इन्होंने कहा टकारा इज अ वेरी वेरी गुड जापानी ब्रांड व्हिच इज कंपैरेबल टू थर्मो साइंटिफिक एंड लाइक दैट। तो टकारा की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। तो अगेन यू हैव टू चेक वंस, यू हैव टू ऑप्टिमाइज द प्रोटोकॉल। एक दफा ऑप्टिमाइज कर लें देन वी कैन गो विद दिस। सर वो जो आपने कोलैबोरेशन मेंशन की है पैक बाय और Illumina की,
तो उसको हम रियल सेंस में लॉन्ग रीड कह सकते हैं कि नहीं? Long read है. They have claimed to go up to 20,000 base pair, even more than that. But अभी वो यूनिवर्सिटी उन्होंने उसको लॉन्च नहीं किया, उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया है, मे बी यूएस फर्दर साइड पे यूज भी स्टार्ट किया है, बट जैसे यूमीना ग्लोबली स्प्रेड है, ऐसे अभी वो लॉन्ग रीड तो प्रैक्टिकली हम अभी ONT को ही एक लॉन्ग रीड सोल्यूशन कह सकते हैं. बेस्ट सॉल्यूशन है लोकल सेटअप. और सेकंड ये कि यूमीना का अगर आपने लॉन्ग रेंज करना है, यू हैव टू बाय द मशीन वर्थ ऑफ आई थिंक पाकिस्तानी 25 करोड़ रुपए. 25 करोड़ की सीएमडी के लिए कुछ भी नहीं है. छोटे दाम के लिए सॉफ्टवेयर के लिए. So Lumina machines are very expensive. So, Dr. Sir, have you ever observed there is any difference in the accuracy of the result if there are long stretches of A's or D's in the sequence? So in case of there is a homopolymers, or you can say same nucleotides, the accuracy usually decreases. So for that purpose, you have to increase the depth of sequencing.